Hello class, welcome back to your maths class. So kids, in the last class what we were doing? So in our last class we were doing some question based on multiplication, है ना? Multiplication पे based हम क्या कर रहे थे? We were doing some question based on multiplication. And now what we have to do today? Today also we will do few questions based on multiplication, and well after that, after doing the questions on multiplication, we will move toward the next topic, that is word problem based on multiplication. तो कल के जो क्वेश्चन किए वो क्वेश्चन हमने कैसे किए? कल के जो क्वेश्चन थे हमारे वो क्वेश्चन क्या थे? वो सारे क्वेश्चन जो थे वो 2/2 के थे, मीन्स ऊपर 2 डिजिट नीचे 2 डिजिट. तो आज की भी जो क्लास है हम उसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट विद दैट ओनली, लाइक मल्टीप्लाई. फाइन. सो वी विल स्टार्ट विद मल्टीप्लिकेशन नाउ. Okay, so let us do the question on multiplication. Now the first question is 82 by 40. ठीक है? So what you have to do? You have to multiply the two numbers, that is 82 and 40. आपने क्या करना है? two numbers आपको multiply करना है. वो two numbers क्या है? 82 है और 40 है. ठीक है? तो इन दो नंबर्स को हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. हाउ विल डू दैट? कैसे होंगे ये मल्टीप्लिकेशन? कैसे होंगे? 82 एंड 40. So first of all we will write 82 here, and down there we will write 40. And now what we have to do? Now we have to multiply them. 82 लिख दिया, 14 लिख दिया. अभी क्या करना है? Now we have to multiply. Now do the multiplication. Yeah. ठीक है? So 82 multiply 14. What? You have to multiply these questions. Fine. Now start from the ones place. So when you will start from the one place, what you will get? 4 2s are 8. 4 2s are 8, and then what you have to do? Next is you have to multiply this number with the digit at 10th place. ठीक है? आपने क्या करना है? इस 4 को आपने, ये 10th place पे 8 है, इससे आपको क्या करना है? You have to multiply. चलो, let us do. Okay. Now 8 4s are 32. Fine. We have written 32 here. Now I'm going to put a cross at this place. Now we are having 1 here, and we have to multiply 1 and 2 and 1 and 8. So multiplying 1 and 2, what we will get when we will multiply 1 and 2? So 2 1s are 2, and similarly 8 1s are 8. Now do the addition of this and this. Now here we will get 8. At this place we will get 2 plus 2, 4. And here 8 plus 3, 11. So our answer for this question is 1148. Our answer for this question is 1148. Okay, now moving ahead. Now this side. Okay, now moving ahead, let us talk about the next question. Next question is 125 by 60. Our next question is 125, and we have to multiply 125 with 16. 125 को किससे multiply करना है हमने? 125 को we have to multiply with 16. So do this question. Keep doing this question. Completed? Okay.
and then move ahead. Chalo, keep doing. Now, 6 5s are 30. 30 ko we have written 0 and we'll just carry 3 at the back. Now, 6 2s are 12. 12 plus 3. 12 plus 3. 12 plus 3, 15. So, for 15 we will write 5 and we will give 1 at the top. 6 1s are 6 1, 7. 750. Now, next. 5 1s are 5. 2 1s are 2. 1 1s are 1. Now 0. 5 plus 5 10. 7 plus 2 9. 1 10 and 1 2. So the answer is 2000. So our answer for this question is how much? Our answer for this question is 2000. Got it? इस क्वेश्चन में हमारा आंसर कितना आया? 2000. Okay. Now do these two questions. Come on, keep doing these two questions. Okay, now I'm going to erase the board. Okay, class. Now I have to tell you few things. Few things are that if you have to multiply any number with 0, what you will get? मतलब कि अगर हमें किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या मिलेगा? तो जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कोई भी बड़े से बड़ा नंबर को अगर हमने उसे 0 से मल्टीप्लाई करना है तो व्हाट वी विल गेट? अब यहाँ पे मैम ने क्या किया? 3 क्वेश्चन दिया है. तो जब भी हमें किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करना है तो व्हाट वी विल गेट? 25 zeros are 0, 4862 zeros are 0 and 2380 zeros are 0. So what is this? This is whenever you have to multiply any number with 0. जब भी आप किसी दिए गए नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है? जब भी आप किसी दिए हुए नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर में आपको क्या मिलता है? 0 ही मिलता है. ठीक है, तो आंसर में आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. फाइन, इतनी चीजें समझ में आ गई. तो 25 zeros are 0, 4860 multiplied by 0 we have got 0, 238 multiplied by 0 we have got 0. इतना समझ में आ गया सबको? ओके, नाउ नोट इट डाउन, देन वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. नोट डाउन करो. Now moving toward the next question. Now class, I'm going to write one question and that question is the cost of
क्वेश्चन क्या था? कॉस्ट ऑफ 1 स्कूल बैग इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 12 बैग। 1 बैग का कॉस्ट आपको दिया है और आपको कितने बैग का कॉस्ट पता करना है? 12 बैग्स का। कम ऑन, डू दिस क्वेश्चन। Okay. Now, the first statement is cost of, पहली स्टेटमेंट क्या होगी? Cost of 1 school bag equals to rupees 256. Then cost of 12, oh गलत लिख दिया, कॉस्ट ऑफ 1 स्कूल लिख दिया बेटा। इट शुड बी कॉस्ट ऑफ 1 स्कूल बैग और कॉस्ट ऑफ 1 बैग इक्वल्स टू cost of 1 bag equals to 256. So cost of 12 bags equals to rupees 256 multiplied by 12. Now do the multiplication and find out the answer. क्या करना है? 1 का कॉस्ट was given and आपसे क्या बोला? 12 का पता करने को। 1 का कॉस्ट आपको दिया था, 12 का कॉस्ट क्या था पूछ रहे थे। क्या करेंगे? You have to multiply. Do this question. Completed? Okay. Do this question. Okay, fine. So what we have to do here? We have to multiply 256 and 12. ऐसा क्यों करेंगे? 1 का कॉस्ट दिया था, मैनी का पूछा था, तो हमने क्या करना है? 256 को हमने क्या करना है? 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो लेट अस डू हियर। तो 256 multiplied by 12. Start from the ones place. Okay. Okay, wait class. Let me write it there. क्योंकि नीचे की स्क्रीन शायद आपको ना दिखे, तो मैं इधर लिख देती हूँ। So 256 multiply 12. 6 2s are 12. Carry 1. 5 1s are 5. 6 2s are 12 for 2. Carry 1. 5 2s are 10 1. 11 1. 2 2s are 4 1. 5. 6 1s are 6. 5 1s are 5 and 2 1s are. Now what is the next thing? You just have to add these numbers together. आपने क्या करना है? इन नंबर्स को खाली साथ में क्या करना है? ऐड कर देना है। तो 2 plus cross 2, 6 1 7, 5 5 10, 2 1 3 हो गया। चलो, so the cost of 12 bags is equals to 3072. 3072 is the cost of 12 bags. Note it down, then we will move toward the next question.
Completed? Okay. Now moving toward the next question. So ma'am is going to erase this board. Now moving toward the next question. So the next question is, in a flower row there were, okay class, so we were doing a question that a flower row has 321 rose plants. A flower row has 321 rose plants. Okay? How many rose plants will be there in 12 rows? वन रो में कितने थे? 321 रोज प्लांट. अभी क्वेश्चन क्या पूछा कि 12 रोज में कितने प्लांट्स होंगे. फाइन, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि 12 रोज में कितने प्लांट्स होंगे. कम ऑन, डू दिस क्वेश्चन. करिए इस क्वेश्चन को अभी. नाउ एज यू नो दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम, सो यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट आल्सो. क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो आपने क्या करना है, आपने स्टेटमेंट भी लिखते जाना है. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे? अ फ्लावर रो हैज 321 रोज प्लांट. ठीक है, सो नंबर ऑफ रोज प्लांट इन वन रो इक्वल्स टू, okay, now the first statement is the number of plants in one row equals to then number of plants in 321, oh sorry, number of plant in 12 rows equals to, okay, अभी क्या 321 and here will be 321 multiplied by 12. तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे so what will happen, you will get your answer. ठीक है, 321 और 12 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा. तो चलो फाइंड आउट योर आंसर.
Okay. Now, so 321 multiply by 12. 321 multiply करना है कितना? 12. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 3 twos are 6. नीचे एक क्रॉस का साइन. 1 ones are 1, 2 ones are 2, 3 ones are 3. Now add 2 plus cross, you will get 2. 4 plus 1, you will get 5. 6 plus 2, you get 8. 3 ka you will get 3. So the answer for this question is 3852. Answer for this question is 3852. Completed? Note it down, then I will move to with the next question. इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी. Okay. Now going to raise this question. Moving toward the next one. The question is the cost of a box contains. Next question is a box contains 48 chalks. Find the number of chalks in 12 such boxes. Find the number of chalk in 12 such boxes. One box में, one chalk box में 48 chalks थे. अभी आपसे पूछा कि 12 बॉक्स में कितने चॉक होंगे. 1 बॉक्स में 48, तो 12 बॉक्स में कितने चॉक. फाइंड आउट द आंसर. Completed? Now let us solve this question. So a box equals to a box contains 48 chalks. You have to find out the number of chalks in 12 such boxes. Okay. So the first statement for this question will be number of chalk in one box equals to कितने चॉक थे वन बॉक्स में 48. So there were 48 chalks in one box. Now
Next is number of chalks in 12 such boxes is equal to 12 multiplied by 48. 12 box equals to 48 multiplied by 12. ठीक है? So what will happen? If we will multiply these two numbers, we will get the number of chalk in 12 boxes. क्योंकि 1 box में 48 chalk है, this is given. And अभी आपने बताना है कि 12 box में कितने हुए, तो क्या करेंगे हम? We will multiply. So multiply the question. So okay, 48 multiplied by 12. Fine. So we will arrange them first of all, and then we will multiply. 48 and 12. What we have to do? We have to multiply these two numbers here. Now the first number is, so we will start from 2. 2 8s are 16. So for 16 we will write 6 here, and we will give carry 1 at the top. Next is 4 2s are 8, and 8 by 9. Put a cross here. Then 8 1s are 8 and 4 1s are 4. Now what? Now you have to add these two numbers. ठीक है, अभी आपने क्या करना है? इन दो नंबर्स को आपने क्या करना है? ऐड करना है. So 6 9 plus 8 17 7. Carry 1. Now 4 by 5. So the answer for this question is 576. Answer for this question is what? 576. Okay. Now, so the number of chalk in 12 such boxes is 576 chalks. 576 chalk क्या होंगे? इस बॉक्स में होंगे. Okay now. Okay, so now I am going to erase the board. Okay now. Now class, tell me what you will get if you will multiply a given number by 1. Say the number is 8. So what you will get if you will multiply a given number by 1? Yeah, tell me what you will get when you will multiply a given number by 1. So it is one of the property of the multiplication that whenever we will multiply any given number by 1, we will get the answer, the number itself, that is 8. ठीक है? Now, अगर बड़े से बड़ा नंबर हमने लिया, 264 भी ले लिया, उसे 1 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो what we will get? 264 को भी अगर हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो हमें क्या मिलेगा? What answer we will get? 264 multiplied by 1, we will get 264. Fine. What answer we will get here? 264. Okay. Now class, today what we have done? Today we have done few questions based on multiplication, and then we have done few word problem. कुछ question हमने किया properties of multiplication पे भी. ठीक है? So अभी आने वाली कुछ classes we will keep doing the question based on multiplication. अभी आने वाली कुछ classes में हम क्या करेंगे? We will keep doing question based on multiplication only, and then we will move ahead. ठीक है? So class, this is it for today.
And now I will meet you in the next class. Fine, with a new video, and there we will also do few questions based on multiplication, or most possibly the word problem. Fine, we'll do few questions based on word problem.